Sir, in charge is present with the records of the case, my lord. So now, this is a case, my lord, wherein this honorable court क्या कह दिया asked था? for certain queries, my lord, as to what is the exact date when the first, second, and third time scale of pay has been given to the petitioner. जी Primarily, if I may just apprise, my lords, जी one important aspect. जी The primary dispute relates to as to whether when the initial appointment was made, the training was given thereafter. So in some cases, the training was after 2 years. In some cases, the training was after 5 years. जी Like in this case, the appointment happened in 1990 of the present petitioner. 1990 The training was given in 1995. जी The first time scale of pay, the circular came on 24/1/2008, Annexure P1. 24 1 हाँ 2008, my lords, Annexure P1. हाँ I'll just apprise the dates, my lords, then I'll हाँ come हाँ to हाँ that. हाँ हाँ Now, in that, the forest guard was not there. A clarification came on 4/11/2010, हाँ including the forest guard with effect from 24/1/2008 only. जी So, in that circular at Annexure P1, the time scale, first time scale of pay had to be given from 1/4/2006. हाँ And that was given. हाँ In all the cases, that was given, my जी lords. Thereafter, the second time scale of pay, जी the dispute arose as to whether the original date of appointment or the date when the training happened should be क्या considered. अपॉइंटमेंट ओरिजिनल अपॉइंटमेंट में क्या कंडीशन थी ट्रेनिंग के बारे में Sir, एंड हाउ पिटिशनर इज रिस्पांसिबल फॉर नॉट बीइंग सेंट ऑन ट्रेनिंग टिल 1995 I bow down to that, my lords. दैट्स द एंड ऑफ द मैटर If बुला I may लीजिए just- अपने अधिकारी को कौन है आपके अधिकारी दोनों तीनों बुला केस में दो हैं वाइसेस, दे आर देयर, बुला लीजिए कहाँ प्रावधान है ट्रेनिंग का सर ट्रेनिंग का तो मैं बता देता हूँ सर। जो रूल्स हैं 1967 के ओरिजिनल रूल्स थे, हाँ उस पे जो इनका जो अपॉइंटमेंट होता था वो आप प्रशिक्षित ही होता था। मैं वो दिखा हाँ देता हूँ सर। बताइए 2000 में रूल्स आए नए, जी उसमें एक क्लॉज 20 रूल 20 आया, जी नॉट वेरी क्लियर, आई वुड गो डाउन टू दैट। मैं बता देता हूँ सर, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हाँ हूँ नहीं बताने आपको की ड्यूटी dates। ड्यूटी तो यू आर एक्सपेक्टेड टू बी ट्रू टू द कोर्ट My lords, my lords। जी जी सर मैंने ग्रीन से हाइलाइटर से किया है, जी। ये 67 के रूल्स थे। हाँ वन रक्षक अप्रशिक्षित अप्रशिक्षित का। सीधी भर्ती द्वारा ठीक है और फिर इसमें कहाँ प्रशिक्षित कहाँ आया सर इसमें नहीं आया है। नहीं है ना नहीं आया 67 के सर। रूल्स में मतलब अप्रशिक्षित ही है अप्रशिक्षित। प्रशिक्षण का प्रावधान कब आया सर प्रशिक्षण का प्रावधान भी बहुत क्लियर नहीं था। 2000 में एक रूल्स बनाए गए। क्या बनाया गया स्टेबल कर दीजिए। क्या है वो नियम 2000 के जी सर इसमें रूल 20 है एक। हाँ रूल 20 जी, यस उसमें आया हुआ है सर रिगार्डिंग ट्रेनिंग, बट उसके बाद भी उसमें जो वर्ड यूज कर दिया फॉरेस्टर यूज कर दिया। एक सेकंड and we are dealing with forest guard वी आर डीलिंग विद फॉरेस्ट गार्ड। appointment after training on successful completion of the prescribed training the directly recruited candidate shall be appointed as under forest course forester जी, not as forest guard नॉट so वो there नहीं is no आया। provision for training is- for there is- forest guard देयर इज नो प्रोविजन, देयर इज नो जी क्लैरिटी इन दिस तो एस्पेक्ट। नाउ व्हाट कानून हैज कानून तो आप ही लोग बनाते हैं ना भाई ये तो नियम वगैरह तो सब आप ही के अधिकारी बनाते हैं या हाईकोर्ट बनाता है नहीं सर। नाउ आफ्टर दैट माय लॉर्ड्स, जी। सेकंड जब इनको टाइम स्केल ऑफ पे दिया, जी सो वी सेकंड टाइम नहीं स्केल ऑफ नहीं यहाँ इशू तो यही खत्म हो जाता है अगर नियम में ट्रेनिंग का प्रावधान है और नियम यह कहता है that after completing the training they will be entitled to all other benefits be it क्रमोन्नति or promotion or other things then things would have been different then the second issue will come that why did you not depute them for training if there was a mandatory provision for training we so did नहीं you did it in 1995 इस केस में जी। इस केस के दैट इज एज पर द सीनियरिटी इसी जैसी। केस की तो बात कर हाँ। रहे हैं इसी केस की तो बात कर रहे हैं तो ट्रेनिंग कहाँ मैंडेटरी है ये बता दीजिए नियम में कि ट्रेनिंग नहीं होगी क्योंकि अब तो भर्ती ही अप्रशिक्षित पे कर रहे हैं 67 में तो अप्रशिक्षित पे। अप्रशिक्षित पे कर रहे हैं ऐसा कोई नियम है नहीं उसके बाद का कि जिसमें यह दिखाया जा सके कि प्रशिक्षण जो है अनिवार्य योग्यता थी सर वो क्लैरिफिकेशन टाइम स्केल ऑफ पे के रिस्पेक्ट में बाद में आया। कहाँ आया वो बताइएगा वो मैं बता देता हूँ सर। जी। इसके बाद क्या हुआ सर, इसमें सेकंड टाइम स्केल ऑफ पे इसमें हमने विद इफेक्ट फ्रॉम 2015 में दिया। उसको हमने दिया, इसमें मैं एग्जैक्ट डेट बता दूं, 20/11/2015 को। इसको हमने दिया फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रेनिंग
because 95 he completed the training, 20 years हाँ 2015 ठीक में. है. Now the clarification came. हाँ. The clarification circular is 14/9/2018, my lords. 9/2018. हाँ. That is annexure. That, my lords, I'll just hand it over. My lords. The records are there, my lords, the original, because my lords have called for the records. Now, इसमें सर clarification आया. क्या है? सर, राज्य शासन वन विभाग पहला पैराग्राफ से. हाँ. दिनांक 8/9/2014 को अधिसूचित मध्य प्रदेश अलिपिकीय वर्गीय वन सेवा भर्ती नियम 2000 में अप्रशिक्षित वन रक्षकों व प्रशिक्षित वन रक्षकों के पृथक पृथक पद व वेतनमानों को एकजाई कर वन रक्षक पदनाम तथा वेतनमान 5200, 20200 ग्रेड पे रुपये 1900 के किए गए प्रावधान को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है. उपरोक्त क्रम में वन विभाग के वन रक्षक के लिए समयमान वेतनमान निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है. इसमें सर ये वेतनमान एवं ग्रेड पे 1900 दिया है, तो ये प्रशिक्षित का था. कहाँ लिखा है प्रशिक्षित का? सर क्योंकि ऊपर ये लिखा है सर. नहीं, आपने तो एक जाई कर दिया ना. एक जाई करके मर्ज 1900 कर दिया दोनों कैडर जी. को. तो पहले तो ये बताना पड़ेगा आपको, ये मर्ज करने के पहले वित्त विभाग ने जब मर्ज किया, जी. ये कैडर अलग अलग थे कहाँ भर्ती नियम में, प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित के. भाई एक तो जब करेंगे ना हम, जब कैडर एग्जिस्ट करते होंगे, वेयर वाज द कैडर ऑफ अप्रशिक्षित फॉरेस्ट गार्ड एंड प्रशिक्षित फॉरेस्ट गार्ड? सर वो 67 से चल नहीं, 67 से तो नहीं. आप खुद मान रहे हैं ना ये बात? मैं आपकी कंसेंट लिखाऊंगा क्योंकि आपकी डीएफओ आपके साथ साथ. नहीं, मैं नहीं, तो प्लीज, जो नहीं, पेपर्स बोल रहे हैं वो बता रहा हूँ सर. प्लीज डोंट ट्राई टू रिगल आउट. you have a greater duty towards this court. हाँ वही मैं. ठीक है? You are there to assist the court. You admit that in 1967 rules there is no provision for trained forest guard. जी. ठीक है? आप प्रशिक्षित है सर. Subsequently, you have produced the second set of rules that talks about forester, that does not talk about forest guard, trained forest guard. Rule 20, my lords. Rule 20 talks of forester, not about forest guard. Forester is a post higher than the forest guard. Forester, Yes, I know that. जी. ठीक है? Then the question of merging the two cadres by the finance department, and can finance department merge two cadres without there being any amendment in the recruitment rules? Finance department only issues notification to extend the benefit of financial benefits, fiscal benefits. इसमें लिखते हैं कि राज्य शासन वन विभाग द्वारा इतने को अधिसूचित मध्य प्रदेश तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय वन सेवा भर्ती नियम 2000 में अप्रशिक्षित वन रक्षकों को पृथक पृथक पद व वेतनमान को एकजाई कर वन रक्षक पदनाम व वेतनमान इतना ग्रेड में प्रावधान कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है. तो ये जब थे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो ये अलग अलग ये आ कहाँ से गए? सर मैं एक निवेदन करूं सर. एक हफ्ते का टाइम दे दे, मैं इस आपको पे एग्जैक्ट सेक्रेटरी फॉरेस्ट को बुलाना पड़ेगा. एक हफ्ते तो टाइम दे देंगे. लेट हिम कम एंड एक्सप्लेन. नहीं, ये कार्डर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर. वो कार्डर अगर एग्जिस्ट करता होता तो रूल्स 2 साल के रूल्स में होता. ठीक है, समय देंगे आपको, देंगे समय देंगे ना. श्री रोहित जैन, लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट विद श्री, आप डीएफओ, सबका शुभ नाम क्या है? श्री अनिल चोपड़ा, डीएफओ जनरल फॉरेस्ट डिवीजन. कहाँ के हैं आप? हैं? नर्मदापुरम. आप कौन है? दूसरे केस में सर ये वाइस में. एंड श्री संदीप फेलोज, डिप्टी डायरेक्टर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, are present in person. Next pair. Shri Rohit Jain, on instructions from the concerned officers, submits that the post of forest guard as per the Madhya Pradesh Chaturth Shreni Seva Bharti Niyam 1967 contained post of forest guard untrained, and this post was to be filled up through direct recruitment. He admits that there was no post in the cadre of forest guard within bracket trained. Next para. Thereafter, he places reliance on the provisions contained in the Madhya Pradesh Class 3 within bracket non-ministerial bracket close forest services, comma, rules. Sorry, Forest Services Recruitment Rules 1999 and reading
Rule 20 admits that there is Rule 20 reads as under, within inverted commas 20 dot, appointment after training dash on successful completion of the prescribed training, the directly recruited candidates shall be appointed as under colon dash फॉरेस्ट कोर्स लेफ्ट में लिखिएगा, राइट में लिखिएगा फॉरेस्टर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज. Thus, on instructions and on his own application of mind, he admits that there is provision of training for appointment as a forester and there is no post of trained forest guard even in the rules of 1999. Full stop. Thereafter, he places reliance on Finance Department Circular number F-8-1/2015/rules/4 FOUR, Bhopal, dated 14/9/2018, which makes mention of Forest Department notification dated 8/9/2014 showing merger of posts of untrained forest guards and trained forest guards, but is at loss to point out that when these two separate posts, namely of trained forest guard and untrained forest guards, are not mentioned in the recruitment rules, then without there being any provision for two different posts of forest guard being trained and untrained, how can there be a order of merger? Full stop. He prays for a week's time to clarify this aspect. Let affidavit of the Principal Secretary of the Forest Department be filed in this behalf, because this issue of Gazette notification is not dealt at the level of the DFO who are present before this court, but at the level of the state government, as is mentioned in the Finance Department memo dated 14/9/2018, and therefore, full stop. Let detailed affidavit along with the concerned recruitment rules showing the existence of two separate posts of forest guard trained and forest guard untrained be brought on record within 7 days. List this case on एक निवेदन करूंगा. 29 फरवरी 2024. एक निवेदन. हाँ. 10 दिन देते हैं नहीं बहुत है सर, थोड़ा अरे सा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना नहीं पड़ेगा. विधानसभा भी खत्म हो गई, अब तो क्या है, नहीं, अब तो मैं- नहीं वो और कुछ रिक्वेस्ट में 10 दिन देते हैं. शासन में जो सेक्शन इंचार्ज होता है उसको अगर प्रमुख सचिव साहब बोलेंगे तो वो 15 मिनट के अंदर फाइल लेकर आएगा, और फाइल जो है जिस हिसाब से मेंटेन होती है, आपने वल्लभ भवन में वकालत नहीं की है, हमने देखा है, फाइलें बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन होती है, 15 मिनट लगता है बस फाइल लाने में. उसमें एक ही निवेदन करना. बस नहीं बस उसको डेट दे दी नहीं, 29 तारीख डेट दे दी. यू कैन नॉट हैरेस. बस हो गया. फिर आपके नहीं तो कुछ अन्य बहाने आ जाएंगे, इसलिए अभी आप इसको जो है कर दीजिए, 29 तारीख को पेश कर दीजिए. एफिडेविट बी फाइल्ड ऑन और बिफोर 28 फरवरी विद एडवांस कॉपी टू द लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर. तीनों केस जो हैं ये इकट्ठे जाएंगे. चलिए. पर्सनल प्रेजेंस ऑफ द डीएफओ श्री जो भी शुभ नाम है एंड श्री फेलोज डिप्टी डायरेक्टर इज डिस्पेंस्ड विथ फॉर द प्रेजेंट. आपकी जरूरत नहीं है अगली पेशी पर.